नहीं दे दो उसको, कर देगा, सिखा दो। इसको धोखे डाल दो बस। हाँ वो सिखा दो, करेगा। ये भी बेटा, ये भी धोखे थे। अब ये बात कर लेंगे। When we got on Tuesday actually. Now yesterday Suhas called and fixed the appointment on Monday, but we have booked the ticket on Monday. So we are thinking whether to go. Should not, but if he is not well. Now he is okay, but evening, every day evening, every evening, 4:30 to 7 o'clock we will be having every day. Yes. After 7:30 evening. But wonderful, you can postpone. Is there any urgency? No urgency. But we have booked the ticket and we have. I book the ticket earlier or by cancel it. Can be cancelled. That you cancel it first, and it should be all right. Then you can plan. I think it should be. I have got all the reports to show. You have? Yeah, Just show me. No, it's not showing. yeah. Bring it. Because if it is thyroid, I can understand some. But doctor was not able to diagnose properly what problem he has because there is some malfunction of thyroid. It's because of infection. What kind of infection is it? What is the cause for that infection that no one can? Yeah, it is only endocrinologist. You can. Yeah, yes, yes, इतना yes. लंबा इन्फेक्शन इतना लंबा तो नहीं चलता है। 3 months now. हाँ इन्फेक्शन थोड़ी चलता है। But because he is fever means there is infection. Yeah. I think, in my opinion, you should postpone for couple. Yeah. And that Yesterday he went to the SDM, Udyava, that Ayurvedic. That also he went because he has piles. no, I believe it. Not for he also got no piles because of I believe SSD. it's good, but question. सुबह हम लोग गए थे वहाँ। It seems doctor is suggesting surgery, right? क्या गोवर्धन गए। क्या हुआ, कितने की बोला? वो ये जो हम ले गए थे हम लोग नहीं कर सकता हो। सुनो ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर पानी डालना है, कवर करना है, नीचे दिखाया। हाँ कवर या मसाला 10 रुपए में। वो दिखाने के लिए अच्छा है ना। सुन तो नहीं, तो ये है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के ऊपर पानी डाला, ये तो नहीं चाहिए, लेकिन उसका फोटो लिया है हमने। जो राधा कृष्णा लगे हुए हैं पूरा पूरा एल्युमिनियम है, पानी का चढ़ाया है पीतल का डिजाइन। लेकिन ऐसा बना सकता हो? वो नहीं बनाएगा, हमें नहीं देना ऐसा, वो कॉपर का देगा या वाइट का। लेकिन हमारे साथ क्या है, राधा कृष्ण का दोनों तरफ चाहिए। देखो डिजाइन ऐसा बना सकता है। फोटो लिया है उससे, तीन दिन में बताएगा, 2-3 दिन में बताएगा। नहीं इस साइज का इतना सुंदर बना दे। ऐसा अच्छा है, प्योर कॉपर के इसके साथ हमको राधा कृष्ण का लेकिन डिजाइन कहाँ उसके पास? वो डिजाइन ऐसा बनाएगा, वो ऐसा लगता है जैसे वो डिजाइन क्यों है? इतना सुंदर है। मेरे को लग ही रहा था 10 रुपए में दुनिया खरीद लेगा। हरे कृष्णा। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद बहुत बिजी है। So when we were there, I think probably. No, probably is coming daily Mangalarti. हाँ. Last 2-3 months there. वो भी क्या आप लोग भी नहीं आ रहे हैं ना? तो नागराज हाँ, that it reduced. वो बोले आएंगे आए एक दो टाइम आए। Yeah. I'm still in the case. No, the last thing is the Pfizer was thinking that it had it is not. I think बाबू कौन सा है, मेरा वाला है क्या? तेरे को कोई नहीं। अरे ये खून कौन देगा? अरे अभी तो मेरा तो सारे टेस्ट तेरे को डर नहीं लगता जब खून निकालता आने है? के पहले है ना? हाँ मेरे को भी लगता है। ये लोग हर दिन बोलते हैं टेस्ट दो।
पूरा सब They keep telling me, you have to give one more test, you have to give one more test. I say, I'm not. When I was Hare Krishna. हाँ हरे कृष्णा प्रभु Hare Krishna. Ready? हरे कृष्णा You read the fourth chapter? हाँ not read प्रभु Hare. but I listen all of you This is not correct. हाँ I muted you. So for this I have done, just take the decision. Mataji is also another doctor. Yeah, Dr. Galina. Ah, We went together. Ah. My friend. you can consult him also. His is nearby only. He is eye specialist, nearby only. Eye and मेरा आपका गड़बड़ हो गया ऑपरेशन हो गया इसका कम हो गया वही एम्स में My book has come. एम्स में कैसे ही है मम्मी. Really, my book has come. Amazon. हाँ. Not your book has come. No, I have. Yeah, Yes, yeah. his book and See, I am getting latest book always. Hey, what is this? This is tablet. Keep it inside. Tablet का है. और नाले एस्टिमेट हाँ, वो tablet के लिए अंदर रखो. इसमें कैमरा वो मोबाइल लगाएगा. What is that? No, ठीक है. It will start later. He has to start. He has to fix. फिर से डॉक्टर दिखाते हो जिसने किया था सब तक डॉक्टर है उसका नहीं नहीं मम्मी उसको केस डालो उस पे. हाँ. किसी ने किया मेरा तो This is required. नहीं आज ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. हाँ. जिसमें दिखाया था 3 महीने पहले तो ये जो नंबर है इसका थोड़ा सा बढ़ गया तो मैं ऐसे बंद करके भी देखती हूँ इससे इतना वो नहीं, इतना इससे पता नहीं। चलो मम्मी. ऐसे तो मोटे मोटे खत्म तो नहीं हो जाए। चलो मम्मी. माता जी. हाँ. Best ही ना. कीर्तन शुरू करो. Already it's online now. People are watching. Start. ठीक है. Hey Sridhara, get him Kartal. Mridanga, you know how to play? You know Mridanga also. Yeah. So you go and get a Mridanga and Kartal. He will get you. अरे मेरे को भगवत गीता चाहिए This is such a nice program. 100 families should come, isn't it? Correct? If we every day meet 10 people, matter of time it will happen. And that's how it happened. In India, we have freedom. We can meet people. Then, when you are planning, 6th, his birthday only? Yes. Then next is, chalo, शुरू करो. Krishna Kristaya Bhutale
Krishna, Krishna Krishna
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. Hanging.
It's for you. Chapter 3. Hare Krishna, Murti Mataji. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me, Prabhu? Hare Krishna, Vanita. Okay. Hare Krishna. Murti Mataji, put screen and gone. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Hare Krishna Mataji, Murti Mataji. Okay. Shall I read the translation? Hare We start. Hare Krishna. Can you hear me, Prabhu? Yeah. Can you hear me? What is happening? Really? Sridhara, where is he gone? So we finished first chapter, we finished second chapter, today is the third chapter. Does anybody remember all the shlokas for second chapter? There were 19 shlokas to remember. You noted down? Huh? All 19? This is my. Oh. Okay. And he's ready with the third. Hare Krishna Prabhu, can you hear me? First chapter, second chapter. First chapter was mainly 4 questions of Arjuna. Why he doesn't want to fight. This is the connection to the second chapter. And in second chapter, one more reason why he doesn't want to fight. And in the second chapter, all the 5 questions were answered. At the end of the second chapter, Arjuna asked again 4 questions about Siddha Prajna. What is the behavior of a realized soul? And remaining of the chapter, though that question is answered. Third chapter, again, the whole Bhagavad Gita is question and answers. Yeah, more what we are trying to do is trying to get hold of the thought flow of Bhagavad Gita. What is Krishna asking? What is Arjuna asking? What is Krishna's answer? What is Arjuna asking? What is Krishna's answer? You understand? It's a good way to study or not? Okay. Oh, this is clear. The third chapter. This is hanging now. So no problem, no problem. Oh, you have 2 or only 1? One for him, one for us. क्या हुआ? नहीं, मेरे लिए चलेगा. हरे कृष्णा. Hare Krishna Prabhuji. आशीष. हरे कृष्णा. Hare Krishna Prabhuji. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, I can hear you. You can hear me? It's clear? Yeah, I can hear you, Prabhuji. Good. Good. Rika Mataji is there or she is in the kitchen cooking something? She has gone to her home, Prabhuji. Okay. And I think her home is in Haryana? Yes, Karnal. Karnal. She looks okay. Chalo. ठीक है, Prabhuji. So we are in the third chapter. You have Bhagavad Gita with you? Yeah, I have. You get hold of the Bhagavad Gita. Get Bhagavad Gita. Okay. You need Bhagavad Gita. You have in your mobile Bhagavad Gita? Good. So now third chapter, I'm going to divide into 5 portions. First portion is Shloka. Sorry, I am in first. Sorry. Yeah, 5 portions.
The first portion is Arjuna's question again, because all Arjuna questions have been answered now. So Arjuna is again opening, asking some question. That is beginning of the third chapter. First two shlokas is his question. Okay. Then 3rd to 9 is Krishna presents to Arjuna now something called Nishkam Karma Yoga. You heard about this word? Working without any personal result. Then 10 to 16, Krishna will present something interesting, Karma Kanda. Karma Kanda, just like he did in the 2nd chapter also. Karma Kanda means I am working for some fruit. Nishka means I am not working for any fruit. So he slowly takes some, he answers him even from Karma Kanda. The 17 to 35, Krishna talks about setting the right example. You may have no desire, but for general public, set a right example. You don't want kingdom, doesn't matter, but as Kshatriya fight, set a nice example. And the last portion, Krishna talks about how to conquer lust. Okay? So these are actually the 1, 2, 3, 4, 5 portions of this chapter. It can be divided in another way. The Arjuna asks a question, first and second. And then 3 to 16, Krishna talks about how renunciation is difficult, but Nishkama Karma Yoga is better. And 70 to 35, Krishna talked about how he should set a good example. And ultimately, whole chapter concludes that lust is a formidable enemy and how we overcome it. So this is actually the structure of the chapter. हाँ प्रभु जी, एक notes copy, एक pen चाहिए. This is what we are doing, Prabhuji, the summary study. We are trying to get hold of the thought flow. What are the Arjuna's questions? What are Krishna's answer? Trying to understand that. Welcome. Where coming from? Vikas. Yeah, welcome. Is your friend? Yeah. Vikas PU College? Okay. Sorry, I keep forgetting. Last Sunday, last to last Sunday. Oh, no, after the program. They came last Sunday? Last to last. Oh, take it. I'm wondering. In the class, I am seeing you first time. Okay, now what we are doing now is that we are doing a kind of a study which is very interesting. It's called a summary study. In a summary, we are studying Bhagavad Gita. Okay, is it interesting? So we will be do today the 3rd chapter. We done first chapter. One Sunday we do one chapter. Today we are doing the 3rd chapter. Okay. Now, who is to do first post? Hare Krishna. First and second is mine, Prabhu. Okay. Hare Krishna. Welcome, Hare Krishna Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Okay. We are doing a summary study of the 3rd chapter today. Okay. 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 Now, I have given to different devotees to present. There are 5 portions of this chapter. You have Bhagavad Gita with you, Mataji? Yes. Get hold of the Gita and have a notes copy with pen with you, because you will yourself enjoying making notes now. Okay? Yes, Pushpa Mataji. Yes, Hare Krishna, Prabhu. Can I read it? Just 1 minute. Let everybody get notes copy, pen ready. Hare Krishna. Oh, very nice. You brought Bhagavad Gita also, notes, pen. That's the way to study. Ish. Good. You both can share that. You can open the book so you are very clear. Okay. Yes, Murti Mataji, start. Yes. Arjuna Uvacha. So I'll read the translation. Prabhu. Arjuna said. Yeah, you can. "Oh, Janardana." Yeah, you can read the translation. Yes. Is it okay? Yeah. Arjuna said, "O Janardana, O Keshava." Arjuna said, "O Janardana, O Keshava, why do you urge me to engage in this ghastly warfare? If you think that intelligence is better than fruity work." Actually, in the beginning of this
chapter 3, two questions are asked by Arjuna. Even now, Arjuna is not really happy. He doesn't want to fight, but still, as a student to his guru, Yeah. honestly, he asks, "Why want to urge me in this ghastly welfares? In this ghastly war?" Prabhupada, being trained in philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant not only the holy name in a secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public. So, as a sincere, he asks these questions: why? See, it's not good. So, but still, why do you want to? Why do I? Is better than fruity work. So, the second questions which he asks is: my intelligence is bewildered by equivocal instructions. Therefore, please tell me decisively what More, the more most beneficial for me. beneficial. He asks as a student, which is more better for me. More better for me. Yes. So, in the previous chapters, as a prelude to Bhagavad Gita, many different paths were explained, such as Sankhya Yoga, Buddhi Yoga, control of senses by intelligence, work without fruity desire, and the position of the neophyte. This was all presented unsystematically. Arjuna therefore wanted to clear up this apparent so that any common man could accept them without misinterpretation. Although Krishna had no intentions of confusing Arjuna by any jugglery of words, Arjuna could follow the process of Krishna either by inertia. In other words, by his questions, he is clearing the path of Krishna consciousness for all the students who seriously want to understand the mystery of Bhagavad Gita. Okay. That's okay, Prabhu. That's all. Very Prabhu. nice, Mataji. Simple. So basically, Arjuna's question you understand. Actually, this is a very important question. Yes. Many times we meet people in the society. They Yes. say, one day I have everything. Don't they say like that? Don't you have a feeling like that? They meet us sometimes. I will leave everything and I will come to Vrindavan. Most of the people's spiritual life means like that. Just dump everything and I'll not do anything. I'll just sit down silently. Hai na? Even our Prime Minister went sit in a cave for some time. Hai na? Generally, spiritual life means withdraw from everything, don't do anything. This is the idea which is permeated the whole society. Hai na? And that's what Arjuna says. Krishna, okay, you are telling me something spiritual. No? Spiritual means I will go to Vrindavan, I will do Hare Krishna, Hare Krishna. What is so spiritual about this? Isn't it? This is, I think, a very deep-rooted confusion. And that's how it became, particularly with the impersonal school. That has become very popular because in the impersonal school, the philosophy which is very popular now in India, is that moment you start spiritual life, first you have to take sannyas. You should forget everybody. And then the spiritual life starts. So Arjuna is therefore asking Krishna, that is my question. See, this Arjuna is a liberated personality. By Lord's arrangement, he is put into confusion. He is totally under control of Krishna. Every question he is asking is like Krishna prompting him. And through him, right placed questions are being asked. Krishna has actually, first chapter, Arjuna has some objections why he doesn't want to fight. And Krishna has answered all his objections in the second chapter. So in that way, Gita is over. But Arjuna opens it up again. And by Krishna's, see, just like a good student, at the right time asks a question, not for himself, for the audience. But this is a very major thing people have in spiritual life means I abandon it. So there are various reasons Krishna will say. Now, these two questions are also prompted by some statements of Krishna in the second chapter. So we have to identify that. Prabhupada has given that numbers in the third shloka here. And you can also, if you read through the chapter, you will find there is a reason. He says, why you are engaging me in the ghastly warfare. If you go to the second chapter and 49th shloka, Krishna says, Durenihi
avaram karma. Keep away abominable activities. And in that consciousness, surrender unto me. Buddhi yoga, cultivate buddhi yoga. Durena hi avaram karma. Locate the shloka 2.49. It says, Dureni avaram karma, buddhi yoga dhananjaya. Keep all abominable activities, cultivate knowledge. So Arjuna says, correct, no. Killing my grandfather, teacher, and all these people here is abominable activity. Let me give up for a kingdom. It's all abominable. Huh? And I will cultivate buddhi yoga, go to forest and cultivate buddhi yoga. It says like this. And then again, again and again in second chapter, Krishna told him to fight. One side you say, keep away abominable activities. Another side you say, fight. Which I feel is abominable. Okay, so this is what actually his confusion is. And he says, my intelligence is bewildered by your equivocal statement. Ekam vada, tell me one thing. You tell me cultivate knowledge, you tell me fight, it's all contradictory. Tell me one. Just like you want something, somebody gives you 3-4 options, ek bol. The confusion ko kar rahe ho, isn't it? This is the second shloka, the word is ekam vada. Ek cheez bolo na. आपने बोला कर्म योग करो, आपने बोला बुद्धि योग करो, आपने बोला ये करो वो करो, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या करना है, सीधा बोलो. ठीक है, his doubt is in the first shloka. He's saying, you said dure hi avaram karma, keep abominable activities far away. So if you, why intelligence is better than fruitive work? Buddhi yoga dhananjaya, 49 shloka, dure hi avaram karma, buddhi yoga dhananjaya. This is what the doubt is coming. You said cultivate intelligence, keep abominable activities far away, then you tell me to fight. This doesn't make a sense to me. This is contradictory. See, so how nice it is. Bhagavad Gita is question answer. Isn't it beautiful? And we can appreciate Arjuna's question. And look at the implication of Arjuna's question. Most of the people in the society think today, if I have to cultivate spiritual life means I have to drop all the things I'm doing, all the duties, and just come sit in a forest and do some meditation or chant Hare Krishna. I know whatever, but abandon everything, stop all work and sit down. Isn't it? That's what people are saying. Arjuna is questioning on their behalf. Is it right? He knows this is not correct. Therefore, he is questioning. Okay, so you can appreciate that is his doubt. And Krishna has, in the second chapter, given various things. He wants this to be now organized properly. So therefore, is actually Bhagavad Gita, which closed in second chapter. Bhagavad Gita all over actually. Krishna, Arjuna is again asking questions. So Krishna can systematically explain in detail each item which he has already told in second chapter. Krishna talked about Karma Yoga, he talked about Buddhi Yoga, he talked about Bhakti Yoga also, one shloka. There is one shloka Krishna talks about his worship, which is a shloka. Shloka number 61. Go to shloka number 61. In second chapter. You see, Tani sarvani samyamya yukta asit matparaha vasehi yasendriyani tasya pragna pratishtutaha. He talks about matparaha. Matpara means clean. Make me the goal of your life. Krishna talked about devotion. All your restrain your senses and fix your heart in me, your consciousness. That is bhakti, devotion to the Lord. He has talked about that. He has talked about so many things. अब क्या करें? आपके पे ध्यान लगाएं, बुद्धि योग कल्टीवेट करें, कर्म योग करें, क्या करें? एक चीज बोलो ना, प्लीज. एकम वदम. Please tell me one thing. There are so many things you have told. I'm not able to reconcile everything. होता ना? ये सुना वो सुना. I'm not able to put everything together. Please explain systematically. So Krishna will now reveal more and more. This is how the Bhagavad Gita is constructed. Okay. So the first portion was Mataji has done is Arjuna's confusion. Okay, everybody is placed. The confusion has come because of shloka number 49, shloka number 61. And also Prabhupada has talked about shloka number 39, where Krishna says, now till now I taught you by Sankhya Yoga, now I'm going to teach you by Karma Yoga. So there is also in the shloka 39, so many things have come. Okay? That is fine.
Now let us go to the third shloka to 9 shloka. This is where there is a talk about Nishkam Karma Yoga. Everybody online, my voice is clear? You can hear? Sir, perfect, sir. Ashish, मेरा आवाज clear है? Very clear, Prabhu. ठीक है? You could understand the point which we Clear, made? Prabhu. Yeah. Okay, good. So far, so good. Let us proceed. So there, here is talking about Nishkam Karma Yoga, greater than Jnana Yoga. मतलब बिना किसी स्वार्थ के काम करना is higher than just cultivating knowledge. That is what the discussion Krishna is going to put up in 3rd to 9 shloka. With all the shlokas, 7 shlokas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 shlokas are on one topic. Isn't it interesting? Generally, each shloka we take independently, but they're all in one flow of thought, thread of thought. So these 7 shlokas are on upholding, doing work without any personal result, more important than a person who abandons everything and just think I'll meditate on God. Correct? Why? There is a reason for that. Who has prepared for that? 3rd to 9 is whose? Hey Rohan, हाँ sir. ready है? हाँ sir, ready हूँ sir, ready. Notes ready है? चलो Yes, sir. उसको लगा दो. हाँ चलो. Okay, so in the 3rd chapter, Arjuna comes out with a confusion that he is confused on which is better, intelligence or fruitive work. So from 3 to 9, what I've prepared, Krishna gives the answer to this question of Arjuna. So 3.3, the blessed Lord said, O sinless Arjuna, I have already explained that there are 2 classes of men who realize the self. Some are inclined to understand him by empirical, philosophical speculation, and others are inclined to know him by devotional work. Which shloka this was done by Krishna? Sir, 2. Which shloka Krishna does it in the 2nd chapter? 39. 39. Everybody go to shloka 39 and check. Cross reference. You will be satisfied. Hai 39 mein se kuch. Yeah. Read the 39 shloka translation, page 121 in my book. It may be different page. 2.39. Everybody has 2.39? Okay, read shloka. Ha. Thus far I have declared to you the analytical knowledge of Sankhya philosophy. Now listen to the knowledge of yoga, whereby one works with fruitive result. Without fruitive result. Sorry. O son of Pritha, when you act by such intelligence, you can free yourself from bondage of works. Great, exciting. Okay, na? This is there or not? Yes, sir. Hare Krishna. Hare Krishna, we were missing you. You come alone today? Yes. Okay, do you have Bhagavad Gita with you? I see you there? Okay. Oh, you got that? Oh, you ordered? Oh, you got for me one. Thank you. Now you want to use? I have one more. Okay, good. Thank you very much. Gita Ratnamala, you all can know. This is to remember 208 shlokas. You cram 208, then you'll be master of Gita. There in Gita, you can mark in Gita also. Okay, so this is clear, everybody. 2.39, Krishna is telling there are 2 things. Till now, I taught you by Sankhya Yoga. Now I'm going to talk you by Nishkam Karma Yoga. That's what here it is. And now Krishna is, so there he is given 2 paths now. Now Krishna is going to compare both of them. Okay, continue. Yes, sir. So in this shloka, Krishna explains 2 processes to attain Krishna consciousness or attain the absolute truth. One is indirect process, which is philosophical speculation, where gradually one may come to the point of Krishna consciousness. And the second is a direct process, which connects everything to Krishna. So here in the purport, it's explained that the second is better, which is the direct process, as it does not depend upon the purifying of the senses through philosophical process. Because Krishna consciousness itself is a purifying process. So a direct method is always better. So instead of going through philosophical speculation, one can work according to the spiritual master or according to the instructions of the spiritual master or the Lord himself. Okay. Oh, third. This is abridged Bhagavad Gita. You had it since when? Recently? This Gita. No, I bought recently, 1 month. Okay. Online. No, in Sapna book.
Oh, interesting. Books have come everywhere. Very good. This is the first edition we had printed of ISKCON. This is abridged. Abridged, matlab, more or less everything is there. Some big purports are reduced. That's fine. Good. Welcome. Welcome. So 3.3. 3.3. There are two paths. One is acting in devotional service to the Lord. One thing is cultivating knowledge about Him. But when you directly do devotional service to the Lord, it is the Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, three cheez. Karma Yoga is for persons who are not pure. They're gradually engaging in their desires and connecting to the Lord, they get gradually purified. Jnana Yoga for the people whose actually already mind is pure. They can slowly start meditating on it. But Bhakti Yoga doesn't depend on any qualification. It's so powerful that from any stage it can bring you to the Lord. So therefore he's saying it does not depend on the purifying the senses by philosophical process. Bhakti Yoga is direct. It's like somebody comes to temple, what do you say? Sit and start chanting Hare Krishna. Right? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. You don't need any qualification. So therefore, he is recommending the process of Bhakti Yoga. Prabhupada in the purport, that will work. Okay. Chalo, fourth shloka. Yes, sir. Fourth shloka. Not There was a comparison of philosophical speculation and devotional work. Prabhupada devotional work is high. Philosophical देखो क्या होता है? अगर मैं आपको बोले जाके थर्ड चैप्टर तीनों चैप्टर के जो कंसेप्ट से बैठ के समझो, not easy unless mind is pure. You will not be able to sit and do it. Like suppose somebody comes to temple. In the beginning we say थोड़ा सफाई करो. But easy he can do it. उसको बोलो बैठो और तीन चीज समझते हैं. Not do that. He's not ready. Your mind has to be calm. No? You are understanding the point? But easy to engage in. He can wash pots, he can clean. Some way he can do devotional service. But it will not be easy. Even in the work, in the Chatur Varna, one person should not imitate other person. One man food is other man poison. Even in an engagement in our temple also, suppose you say somebody, you just sit down whole day, you keep reading Gita Bhagavatam, people become restless. You cannot sit. Room में बैठे बैठे आदमी पागल हो जाता है. What is this? Sitting in a room and I say yeah, Bhagavatam, 10 days, relish. Unless you have taste, you will go restless. Hai na? So artificially we should not imitate that. For a pure Brahmana, idle mind is not devil's workshop. He has no idle mind. We keep thinking about it. So this kind of cultivation of knowledge and practical devotion service will be better for a general person. Okay? So just sit and go on samadhi, even in sannyasi, that is the fourth stage. Paramhamsa. Kutichaka, Bahudaka, Parivakacharya and Paramhamsa. Paramhamsa is the last stage where Acharya sits down on samadhi on the Lord and disciples are preaching. True, no? So this is not, even in sannyasa it is in the last stage. Normal person trying to imitate, I will go to Vrindavan, Govardhan के पास बैठ जाऊंगा और जप करता रहूंगा. Very good idea. Not good. You have seen that people try to imitate that. It does not happen. Very pure heart you can actually do. Whole time think about it. But we cannot do that. Therefore, my experience is practical. Whenever I'm busy, I'm very happy. Don't you have that feeling? Isn't everybody true? Doctor, आप busy होते हैं, you feel very happy. And you're sitting at home on a holiday, one day चलेगा, थोड़ा rest करिए. Second, you feeling बेजार, you get very irritated. Because we are at the stage of engagement now. So the heart is totally washed. You actually don't want anything. You just want you and the Lord. You want to shut the world. Just want to enjoy the chanting or enjoy reading Gita. So please don't disturb me. But we cannot artificially do that today. So just cultivating knowledge and working better for us at this stage is work. Okay? But work in a way which is nishkam. Don't work for a fruit. Patient आया कितना मिलेगा वो नहीं सोचते. We should think, no, not this. We have to do my duty. Nishkam karma is being upheld greater than at our stage. See, we are one man food is other man poison. For a very advanced stage, he can just sit and think about the Lord. But this is for Arjuna
who's playing the role of a Kshatriya. So instruction for him is don't try to imitate, because you can see sometimes very advanced personality, whole day sitting reading Gita. You don't even attempt that. It will be difficult for you. You will become restless. You need taste. You need taste, not unless you have taste. You neither will be able to sit and chant whole day. Prabhupada says if you try to chant like Haridas Thakur in one day, you'll become mad. For 192 malas. Remember we went to Haridas Thakur place, Jagannath Puri. He used to chant 192 malas. One day we will become mad. Forget. Even 64 mein darte hain log. 192, just imagine. 192 malas take 24 hours. Almost. Maybe 20, 22. है ना? Tushar will try. He'll almost become mad, है ना? He'll become restless here. I can't do this at all. So these are the instructions. Very nice. So he has Krishna is therefore Prabhupada has concluded. Yeah, fourth. Yeah. Fourth, not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. So before this, Arjuna was in a dilemma, and he tells Krishna that I do not want to fight and I want to give up and take the renounced order. So Krishna further solidifies in this shloka saying that renounced order can be accepted only after purification by performing the prescribed duties. So purification can only be done after one performs his prescribed duty. And in the purport, one more example is mentioned that without purification of heart, sannyasa is a disturbance to social order. So one cannot simply accept sannyasa and go and sit in the forest or chant or become a sannyasa. So one has to, only after purification of heart through his prescribed duty can one accept the social order or the sannyasa way of life. I'll go to the fifth one then. Yeah. Fifth one. All men are forced to act helplessly according to the impulses born of modes of material nature. Therefore, no one can refrain from doing something, not even for a moment. So over here in the fifth shloka, the shloka states that the nature of the soul is to always be active. And what body is just a vehicle for the soul. The body is dead, but actually what makes the body living is the soul. How do you prove that the soul is always active? Dream. A dream. Yes, sir. What happens in the dream time? ड्रीम में भी सर हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे रहेंगे, मतलब सोएंगे भी तो it is like what is active? The soul. Soul is active. Soul first plays in the mind, because mind is a subtle. In modern science, you don't have mind. Here doctors are there to doctors. And doctors are mind nahi hai aapke mein. Only brain is everything. But in Vedic science, brain is separate, mind is separate, soul is separate. It's a Vedic science. And actually, if the science accepts it, it will be great advancement for science. Whenever I talk to psychologists, they say, but they admit that science has not advanced this much. But actually, it is true. All three are separate instruments. We all know we have mind, but we don't know what is this. So mind is separate, our brain is separate, and soul is separate. So when we sleep, what happens? We can know that soul is active even at that time. It plays with the mind. Therefore, you have some. Consciousness means the soul, not the mind, not the body. Body is always dead. Therefore, we say, somebody died. What died? Because body never dies. Body is always dead. Jo mara hai, wo kya marega? Body is always just a shirt you're wearing. No, that's the Vedic revelation. Just imagine. And then the mind is also a dead instrument only, which Krishna uses. The soul uses that instrument. So when we sleep, what happens first? What we call the rapid eye movement. Yes, sir. REM1, REM2 करके ऐसे. Sir, there are four. That is the time the soul is playing with the mind. Correct? And then mind also gets tired. It leaves the mind also. It is sitting. Therefore, there are 4 stages of consciousness. One stage is Jagriti, one is Turiya, one is Susupti, and one is Swapna. So when Susupti, when the soul is not interacting with anything, at that time you get deep sleep. पता ना उसको जैसे you cannot totally is disconnected. Neither he is interacting with the body because body is at rest, neither even mind, deep sleep. Then it comes to the mind. Correct? That time the dreams start off. That is, we can say,
Swapna. And when it is connected to the body and the mind, Jagriti. Abhi jo situation hai, soul is giving consciousness both to the body and in the mind. And when the soul is transcending the whole situation, connecting to the Lord, that is called Turiya, the highest consciousness. So there is the lowest consciousness, not lowest. At that time, soul is not disconnected. Then connected to the mind, connected to the body, and Turiya, liberated from this world. It is able to dissociate with the body and mind and connect directly to the Lord. So we can know the soul is active because for a soul doesn't need food, and soul is ever fresh, always full of energy. And you are the soul. Is pride or not? See, we are not talking about I am the body and the soul is inside. But the fact is different. I am the soul, the body is outside. When you talk about soul, वो किसी बाहर चीज की बात कर रहे हैं. अरे आपके बारे में बात कर रहे हैं. And how glorious it is. Soul is ever fresh, eternal. It cannot be destroyed, and it is ever fresh. Soul is not spoiled by anything. And soul is full of energy without any food. Always full of energy. And it's always active. So therefore Krishna is saying, how can you stop activity? It will be artificial. You're full of activity. How can you stop activity? That will not be possible. Yes, Rohan, continue. Yes. And so the conclusion for this shloka is that the soul should be engaged in Krishna consciousness, or else it will work in occupation affected by three modes of material nature. So either the soul goes and works in Krishna consciousness, or is affected by three modes of material nature. So better to work in Krishna consciousness than to pretend to be in a renounced order of life and get affected by the three modes of material. See, it's very nice. Recently, I was talking to somebody. He said, when you do interview, Rashmati is telling me, this company told her, when they do interview, they always ask you, what are your hobbies? And that is how they identify a person. Hobby means what you do when you are free. That shows what kind of person you are. Actually, a hobby shows your real character, not your work. Work is forced. That doesn't show your real character. Suppose a person, when he's free, he drinks and smokes. You know what kind of man he is. You leave a person free. See what he does. If he's sitting and chanting, Hare Krishna, Hare Krishna, that means he is very advanced now. Correct? So what he is doing and he's free shows what is actually his heart is. Correct, nahi? A Brahmana will always think of acquiring knowledge. थोड़ा और दो श्लोक याद कर लेता हूँ, इसको और समझ लेता हूँ, पूरा समझ नहीं है. That is, you have become a Brahmana now. Kshatriya means he'll be thinking of how can I get more respect? What does the person think of himself? He insulted me today. He's more after respect and power. Vaishya, he's thinking, I have only this much money. I want this much. And he's working for that. He doesn't sleep. Sleeping is only Shudra. And because in Kali Yuga, all of us sleep when you are free, therefore it is said, Kalau Shudra Sambhavaha. We get 4-day holiday. What happens? We start sleeping 20 hours a day. Because by nature, Kali Yuga, we are all Shudras. But Vaishya, Kshatriya and Brahmana, by nature, not by birth. Birth is useless. Isn't it? What is more important is the nature. Nobody becomes doctor by birth. You have to qualify. Similarly, by nature, actually, we are in Kali Yuga Shudras because without fear, danda, we don't work. But a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, without any danda, without any push, they are cultivating knowledge or trying to get more power or trying to get more. Okay? It's not the Kshatriya Brahmana not acquiring knowledge to some extent. A Brahmana is pure. There's no desire for money, no desire, just wants knowledge. And that's the end of his day. He's extremely happy. Our third chapter, samajh aa gaya. My day is successor. That's, you're a Brahmana. If that gives you total satisfaction, you're actually a Brahmana. And Kshatriya, that is not, that is compromised. That is good. But I want some, respect. And that is Kshatriya. And Vaishya, उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, पैसा पासबुक देख रहा है. You see some Marwadis, they get in a day one customer, till they are happy. They are fully whole day counting. देखो उनका इतना बड़ा किताब रहता है and keep writing in that. They are fully satisfied with that. So nobody can. Everybody is forced to act helplessly according to the modes of nature. He is acquired, he is dragged. Modes of nature are holding us and dragging us. So Krishna is saying, what kind of inactivity you are talking? Even if you go to forest, if you see some injustice, some tiger is running behind a deer, something, you will take your bow and start running. You cannot, you are thinking of inactivity, it is artificial for you. You are a Kshatriya. You cannot sit inactive.
which is imitating a Paramahamsa sannyasi. Don't try to imitate. As a Kshatriya, you will be fighting. Because Krishna is addressing Arjuna as a Kshatriya. True, Arjuna is a great devotee, he's beyond all this thing. But he's playing the role of a Kshatriya and Krishna is answering him like a. Okay, sixth. One who restrains the senses and organs of action, but whose mind dwells on sense objects, certainly deludes himself and is called a pretender. So over here, sir, pretender in the shloka, pretender is a person who makes show of meditation, but whose mind still dwells on the sense object. That is a person who's a pretender. So one should follow rules and regulation of his particular status. He can make gradual progress in purifying his existence. So instead of doing some show bottle business of pretending to be in meditation, one can actually follow his prescribed duties and make gradual progress in purifying his existence. So this is what this shloka states. Okay, sixth shloka, everybody understand? Pretender means hypocrite. See, he's telling Arjuna, you will become a hypocrite. If you leave all this battle and sit outside, you will be a hypocrite. Why? You are not pure now. You will be thinking, kaisa rajya bane, kaisa money bane. Arjuna is beyond all this, again I am telling, but he is playing the role of a Kshatriya. Don't imitate. You cannot do this. You fight. This is your purification. To work as a Kshatriya, this is your purification. Don't just withdraw. Without the purification of the heart, you will be a hypocrite. True? Krishna doesn't encourage hypocrisy. Nobody likes hypocrisy. No? We should be honest. क्या कहते हैं पाखंड हिंदी में? पाखंड नहीं करना चाहिए. Correct? Mind dwells on sense objects. Certainly deludes. Internally सब छोड़ दिया. Externally बाहर दिखाने के लिए. और internally he is thinking about sense objects. Hare Krishna. Your book is lying with me from one age. I'll give you when you go. Hare Krishna. How did you come? You came from Kerala just now? No, I got a job, sir. Oh, good. Good job. You are selling cars? No, customer care. But you're selling cars. No, customer feedback. They give you discount? You buy through you? Okay, mind dwells on sense object is a pretender. Okay, understood? 3.6. You have in your book with you, Bhagavad Gita is there? On your mobile, it is there? In your mobile, Gita is there, no? Or you give Sridhar your mobile too. Hello. नहीं मम्मी हो गया दे. अरे you are supposed to do ना, आपके लिए रखा था. हाँ आगे जाओ, सबको 3.6 ले जाओ. So there is no need of. You can manage. Somehow today it's not sharing. It's hanging here. Okay. Okay. So this is clear. And whose mind dwells a sense object. It's not. So that's what will be the implication of that. If we just try to imitate, we will not be able to deliver the goods. Just like I say, welcome, Hare Krishna. I say I will do the work of doctor, and Doctor Ji ghar mein busy, and I sit on your seat. Patients will come. I can talk, but can I deliver the goods? I don't know how to treat. You understand? So I say, okay, I'll meditate, but that will be imitation. No? So Krishna is saying, don't imitate. You will become a pretender. You will think, just say it's very easy to say I am renounced, but then your heart you should be renounced first. Otherwise, this will be, we should not cheat. You will be a cheater. So imagine strong words Krishna is using. Mithyachari is a very strong word in Sanskrit. Mithyachari means a pretender. Mithya, achar. Mithya means wrong. Achar means behavior. Your behavior is mithya. Mithya sabko malum hai na? And you know Hindi also? Or Kannada maybe is a word honge, mithya. Kannada has this word? Mithya is false. Mithya is false. So false achar. Mithyachar. Such a nice word. Mithyachari sa uchyate. Krishna says, Arjuna, you try to imitate, you will be a mithyachari.
So nice. Yes, continue, Rohan. 7. On the other hand, he who controls the senses by the mind and engages his active organs in work of devotion without attachment is by far superior. So Krishna actually giving one of direct answer to his confusion. So it states in the shloka that it is far better to remain in one's own business and execute purpose of life. A person who carries his business without attachment is far superior to a person who displays show-bottle spiritualism. And further in this purport, there's an example given that a sincere sweeper is far better than a charlatan meditator. So in this shloka, what Krishna is trying to say is that one who carries the business without attachment is far superior. So it is one of the direct answers to the confusion of Arjuna. Okay, this is beautiful. And Bhaktisiddhanta Prabhupada gives a very nice story for this. He says once somebody went to a temple, and then temple mein kya hua? Suddenly, you are on the 7th shloka? Very good. So temple, what happened? He heard the sound. Pujari inside the altar was making heavy sound. He opened the altar. He had a shaligram in his hand, and he was breaking coconut with that. Can you imagine how offensive this is? So he said, this is actually using Lord for our food is this only. You understand? The pujari, what he is doing, you have seen some temple, वो दर्शन खोलते हैं 2 सेकंड के लिए, पैसा फेंको बंद कर देते हैं, and they keep doing like this. So basically, if you are using Lord for your food, there is nothing as abominable as that. This is not correct. It's not a means of livelihood. Our objective should be worship the Lord, not create a means of livelihood. Okay, so what he says, active organ without attachment is better. Sincere sweeper. So compared to a person who is a hypocrite, better person is who is sweeping the road and earning a livelihood. He is not a parasite on the society. This man is a parasite on the society. True, no? Bolte na parasite. Sincere sweeper is better than a charlatan man. Genuine meditator, we have no problem. But a charlatan meditator, yes, better than a sincere sweeper on the road. He is honorable or not? And this person is not on. पाखंडी जो कर रहा है उससे अच्छा, जमादार उससे ज़्यादा respectable है, मेहनत का कमाई खा रहा है ना? But okay, next shloka does more. Yes, sir. 8. Continue. Sir. Yes. Perform your prescribed duties, for action is better than inaction. A man cannot even maintain his physical body without work. So here, what Krishna wanted to do, since Arjuna is the military general, he wanted him to perform as per his prescribed duties as set forth as a Kshatriya. So he says that one has to maintain his body and soul together. To do that, he has to do some work or the other. So what the propensity in this material world is to lord over material nature. And to get rid of this impure propensities, one has to follow and go through prescribed duties. So here Krishna stresses on the fact that whatever your prescribed duty is as per your social order, you have to carry that. Number 1, to maintain your body and soul together, and number 2, to take out the impure propensities and slowly go in the direction of Krishna consciousness. ये तो सभी माँ बाप बेटे को बोलते हैं ना, अरे मेहनत नहीं करोगे तो खाना कैसे खाओगे? The question is also coming. A man cannot even maintain his physical body. अरे काम नहीं करोगे खाना कैसे खाओगे? Isn't it? Is there or not? It's very clear. सुना नहीं सुना? हैं? ऐश्वर्या बहुत बारी सुना है? You have heard that or not? So Krishna is also Supreme Father. He is also telling, अरे काम नहीं करोगे खाना कैसे खाओगे? 8th shloka. Okay? Action is better than inaction. Inaction is not respected at all. Therefore, Prabhupada also said ISKCON movement is for hard work. Inaction. Inaction वो बहुत advanced situation होता है. For us all things, there is action. Somehow, action. Keep acting. Correct? Don't sit idly. Idle mind, devil's workshop for us. Only at a very advanced situation, an exception made. That is 0.01%. Total samadhi. That person, just by his samadhi on the Lord, is purifying the whole earth. Oh, situation extraordinary hoti. The Lord is attracted. Just like we have acharyas who chanted whole day. We have sampradaya to Babaji's. Gaur Krishnadas Babaji Maharaj, Jagannath Das Babaji Maharaj. ये बहुत rare souls होती है. They're absorbed in the Lord.
Generally, Prabhupada, Guru itself did not give anybody Babaji. That means 100 years ago, this has been closed by a bona fide Acharya. Nobody is giving. This sitting and whole day chanting and all is not practical now. Person should be engaged. Even in ISKCON, we are engaged. We don't sit idly. वो नहीं कि चलो बैठ के भगवान के बारे में स्मरण करेंगे. That will not be possible. ठीक है ना? Action is better than inaction. Man cannot even maintain physical body without work. And then the question may come, yes, Arjuna, why, Rohan, why the 9th shloka is there? What is the link between 8th and 9th shloka? Link. You look at your book. 57, there is a link given. 57. Hare Krishna. Hi. See that? Hare Krishna. Oh, welcome. What is the link between 8th and 9th shloka? नहीं चलेंगे. That by performing actions, one may become bound by those activities. Okay. Yes, very good. Okay. So therefore, what is the answer by Krishna? So here the greatest in this, sir, in 9th shloka, sir, I'll continue. Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work binds one to the material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction, and in that way you'll always remain unattached, free from bondage. So yes, sir. Actually, yes, Krishna answers this question that one may be bound by those activities. So one more thing in this purport is given is that it is said that Arjuna might argue, okay, fine, I might sacrifice for Vishnu by doing yagnas. But he says there is no difference between doing yagnas and work done for Lord Vishnu. And in this purport, they clear that the greatest art of doing work is to work in Krishna consciousness under a guidance of a devotee. So by doing this work, this practice will not only save one from the reactions of work, but will also elevate one to the transcendental loving service of the Lord. Oh. So this is just give me, you have finished your portion? Yes, sir, I finished. Okay, I'll just summarize till now. Yes. Hare Krishna. So you want to summarize? You're clear? Tushar, you can summarize now till now what happened. Anybody volunteering to summarize? See, there was first in the shloka 1 and 2. We have done first chapter. First chapter was 4 questions, reasons why Arjuna does not want to fight. What are the 4 reasons Arjuna does not want to fight in the first chapter? They fight their whole, everyone will... Pala. What are the first one? Compassion. Karuna. Arjuna डरा नहीं था. डरपोक नहीं है. हम लोग को खड़ा करो, हाथ पैर कांपेंगे, इतना बड़ा युद्ध. अर्जुन को डर नहीं लगा था, बट अर्जुन को करुणा हो रहा था. हिंदी ठीक है आप लोगों के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज विच इज कन्वीनियंट चलेगा ना? तो अर्जुन को करुणा, he was feeling compassion. गांडीवा है, and he knows, Arjuna knows. ಹೇಳ ಬಂಟುಂಡೇನಮ್ಮ में गांडी वैसा मर जाएंगे. अदे फर्स्ट अर्जुन का जो रीजन था where it does not want to उसको युद्ध करने का नहीं किया. गीता is only scripture where there is question and answer. बाकी किसी स्क्रिप्चर में प्रश्न उत्तर नहीं है. आपको कमांडमेंट मिले या एक मैसेज मिला, छुट्टी. इसलिए तो सर्वोत्तम क्वेश्चन आंसर बहुत डीप है. जो किसी भी किताब में, धर्म का किताब में पृथ्वी में है, गीता में उसके अंदर है. गीता में वो सब है और उसके ज्यादा भी है. So because it is very advanced, अर्जुन का सिचुएशन इज डिफरेंट. इतना बड़ा राजकुमार है, गुरुकुल है, उसका ट्रेनिंग हुआ है ना. सभ्य पुरुष युद्ध के पहले सोच रहा है कि इन कौरवों को माफ कर देता है, छोड़ो, नहीं चाहिए. बहुत सभ्य पुरुष है. यानी ये ऑर्डनरी आदमी का नहीं बोल सकते. पूरा जिंदगी उसको मारने का प्रयत्न हुआ था,
और जब उसको बदला लेने का मौका मिला तो सबको माफ कर देते है ना। ये तो इसलिए तो गीता बोली गई कृष्ण। तो उसके 5 प्रश्न थे, 5 रीजन है, 4 रीजन पहले चैप्टर में आएंगे और 1 रीजन सेकेंड चैप्टर में आएंगे। तो पहला रीजन वो युद्ध नहीं करना चाहता, वो बोलता है कि करुणा, उसको बहुत ही करुणा। अब मैं श्लोक में नहीं जा रहा हूँ, हमने उसको पूरा स्टडी किया था, ठीक है। आप लोग गीता पढ़ेंगे आपको दिख जाएगा। सेकेंड रीजन अर्जुना नहीं पढ़ना चाह रहा था, युद्ध नहीं करना चाह रहा था। व्हाट वाज द रीजन? सेकेंड रीजन, नो एंजॉयमेंट इवन इफ क्या फायदा है, मैं अपने दादा को मार के गुरु को मार के राज्य मिला, मेरे को तो मजा नहीं आया ना। ऐसे राज्य में क्या मजा है, अपनी फैमिली के सारे मार दिए। हुआ है नेपाल में, होता ना ऐसा, याद है? ऐसा पहले हुआ है, तो औरंगजेब ने भी किया था, सबको मार दिया था, पिताजी को जेल में डाल के साथ भाई को मार के राजा बना था। वो बोल रहा है ऐसे राज्य पाके क्या करना है। एक्चुअली रीजन देखिए, महान व्यक्ति कोई काम करने से पहले 10 बार सोचता है। पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में आप 10 बार सोचते। आपके सामने आपके गुरु और दादाजी खड़े हैं युद्ध में, आप खुद सोचेंगे युद्ध की क्या जरूरत, क्या फायदा है युद्ध का, है ना। राज्य मिल भी गया, क्या इसमें कोई मजा नहीं आएगा। तो पहला रीजन था करुणा, मर जाएंगे सब लोग और देख के बुरा लगेगा। दूसरे, तीसरा, that is second one was no enjoyment. What is third one? ये तो पाप है, पाप है, महापाप है ये तो। ऐसे राज्य को पाना, अपने सारे भाइयों बहनों दादा टीचर को मार के, तो महापाप है ना, करेक्ट नहीं? ये क्या करोड़ों लोग को मार के एक राजा बन गए, क्या फायदा उसका? तीसरा रीजन। चौथा रीजन, उसको लग रहा था कि ये युद्ध हुआ तो घर में सब फैमिली तहस नहस हो जाएगी। बहुत दूर का देख रहा है ना। जैसे घर के पिताजी मर गए, भाई मर गए, बेटे मर गए, वो तो फैमिली तो आपने नष्ट कर दी। और उसके और दूर देख रहा है, उन बीवियों को कौन सुरक्षा देगा अभी। मैंने तो उनके पिताजी भाई सब मार दिए, उनके घर में भी कोई सुरक्षा नहीं बचेगी, है ना। उसके बाद उनके बच्चों को संस्कार कौन देगा? पिताजी मर गए तो ट्रेनिंग क्या है ना, बच्चे जो आएंगे वो वर्ण शंकर आएंगे। वर्ण शंकर मतलब कुछ काम के नहीं। जब घर में ट्रेनिंग नहीं होती, आप फैमिली को नष्ट कर दो, बच्चों का क्या हाल होगा? उनको तो ट्रेनिंग है। कितना सोच रहे हो। 4, 5वां रीजन सेकंड चैप्टर में आता है, उसको थोड़ा इंडिसीजन होता है, तो करूं या ना करूं, वो भी एक अलग से रीजन हो जाता है। कभी कभी होता है ना, करना है क्या, कर रहे हो क्या, रीजन हो रहा है यार, करूं या नहीं करूं, वो भी एक अलग से रीजन बना लीजिए। तो 5 रीजन उसने दिए। कृष्ण की सेकंड चैप्टर में 5 प्रश्न का उत्तर करते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर, कितना सुंदर लगता है गीता। एंड एक्चुअली इस 5 प्रश्न का उत्तर हो जाता है, गीता सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आप 5 के प्रश्न के उत्तर भी देख लेते हैं। पेज नंबर 29। Okay, the first, compassion for friends and relatives. 2 point, Rohan, Hare Krishna, Murthy Mataji. Okay, fine. I'm just, because some new people have come, I'm just bringing them to where we were. The summary में कर रहा हूँ, so that's why आपको इसके बाद it will be easy for you to understand. ठीक है, 2.11 to 2.30. Anybody can read 2.11 to 2.30. Rohan, you can locate. Yes, sir. Read loudly. Read the translations. 2.11. नहीं, पहले you read 1.28 to 1.30. 1.28 to 1.30. Okay, sir. Yeah, read the translation. Okay. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. इसमें ले आए 1.28 to 1.30. पहले लाओ. My whole body is Wait, trembling." 1.28 को लेके. I'm just showing गीता में कहाँ पर है. ठीक है? I'll exactly show you. ये अर्जुन का जो सिचुएशन है. आ गया? You can directly locate the chapter. Here comes 1.28. This is second chapter. Oh,
Press, you can press it, flies. Hare Krishna. Okay, so what is 1.28? Please read, Rohan. Yes. Arjuna said, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up. ठीक है, physical symptoms हैं. अब next. My whole body is trembling and my hair is standing on end. My bow Gandiva is slipping from my hand and my skin is burning. Next one. I am now unable to stand here any longer. I'm forgetting myself and my mind is reeling. I foresee only evil, O killer of the KC dim." This is the first reason. पहला reason वो युद्ध नहीं करना चाहता. Switch on. Okay, so this is the first reason, and इसका उत्तर आता है 2.11 to 2.30. Yes. So Krishna basically इसके आंसर में he says you are crying for what is not worthy of crying. तो शरीर के लिए रो रहे हो तो शरीर है ही नहीं. इसका आंसर ये है. कृष्ण आंसर इसका बहुत डीप दे रहे हैं. आप समझ रहे हैं? जनरल लोग हम लोग सब शरीर के लिए ही दुखी रहते हैं. कृष्ण is saying we are not the body. So this is the answer 2.11. Yes, 2.11. You come to 2.11? Yeah. Chalo. Read. The blessed Lord said, "While speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead." Continue. Never was there a time where I did not exist, nor you, nor all these kings, nor in the future shall any of us cease to be. Anyway, so the previous look at 2.11 में क्या चीज लिखा है? Go to 2.11. Yes, what does it say? Not Tevaham, sorry. Ashochan Anuvashochan. किसको याद है श्लोक है? हाँ, माता जी. हाँ, tell. श्री भगवान वाच अशोष्यस्त्वं वेद्यावादांश भाषसे गतासु नगतासु चरानुशोषन्ति पंडितः. ठीक है? Is it clear now? अशोचान अनुवशोचस्तम. तुम रो रहे हो जो रोने की चीज नहीं है. So first question is answered, and Krishna then elaborates on that in the remaining shloka. आत्मा का ज्ञान. हाँ, ठीक है? सबको मालूम होगा. नैनम छिन्दन्ति. Then वासांसि. नवानि. नरोपराणि. अन्यानि. अन्यानि समयाति नवानि. Just like we change dresses, the soul changes bodies. ये सब कृष्ण जी आत्मा का ज्ञान देते हैं, सबको मालूम है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है गीता का. ये शरीर नहीं, आत्मा. यहाँ से गीता का ज्ञान शुरू होता है. पूरा गीता आत्मा का डायनेमिक्स है. जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आपने एक एलिमेंट नया आइडेंटिफाई किया, करेक्ट? हाइड्रोजन हो. उसके बाद लोग बोलेंगे इसका मास बताओ, स्पिन बताओ. So Krishna says that we are not the body, we are soul. And rest of the Gita is nothing but dynamics of the soul. Karma yoga, Jnana yoga, Ashtanga yoga, Bhakti yoga is how you can lift the soul. So if you say there is no body, there is no soul, then all the Vedas can be closed. And if the soul is there, it actually today it is agreed by all scientists that Chetana hai, consciousness hai. But what is the source of consciousness, they do not know. वो वेद खोलना नहीं चाहता. If they open the Vedas and learn, they will save time. उनका समय बच जाएगा. ठीक है? So this is clear. So ऐसे करके all the 5 questions are answered. Second question was no enjoyment even if victorious. Krishna answers that. ठीक है? तो आप you are all clear? Krishna very systematically answers the 5 questions. That was the second chapter. Done. Now we came today to the at the end of second chapter. Arjuna asked Krishna 4 more questions. स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधि से एक स्थित प्रज्ञ लोक का एग्जाम्पल. तो बहुत टाइम पहले मेरे को याद है न्यूज़पेपर में आया था एल.के. आडवाणी स्थित प्रज्ञ. तो स्थित प्रज्ञ का मतलब मालूम है क्या? कैसे उसको स्थित प्रज्ञ बोल सकते हैं? 90 साल में भी उसको प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है. वो कैसे स्थित प्रज्ञ का डेफिनेशन अलग है.
And what is the Sindh Pratmika definition? Even now he's ready to become prime minister, no? Maybe. लोग मजाक करते हैं. What is the shloka? Sindhpatna's first answer or Krishna? उसका आंसर क्या है? What is the answer? नहीं, read the shloka. Read the shloka. Second shloka. सिद्धपग्न से क्या भाषा का next shloka? What is the answer? Arjuna said, what are the symptoms of that is the questions. Yeah, what is the answer? Let's not say, oh Partha, when No, read the translation. Praja. No, shloka. Shri Bhagavan Vacha, Prajapati Yada Kamas Sarvapartha Manogatan Atma Naiva Atmana Tushta. Siddhapragna. अब सिद्धप्रज्ञ, प्रज्ञा मतलब नॉलेज, सिद्ध मतलब जो उसमें सिचुएटेड है. आप बोला हिंदी आता ना, सिद्ध मतलब कहाँ सिद्ध हो. तो somebody who is situated in knowledge, realized soul, अर्जुन बोलते हैं उसके लक्षण क्या है, कैसे हम पकड़ सकते हैं एक आदमी ज्ञान प्राप्त कर लिया. तो कृष्ण जी उसके आंसर देते हैं सिस्टमैटिकली. नेक्स्ट मे बी इस प्रश्न का, दिस कम्स एट द एंड ऑफ सेकंड चैप्टर and the answer of that goes for 54 to 72 till 72 end of chapter. कृष्ण उसका आंसर देंगे. एक सिद्ध पुरुष के लक्षण है ना. आजकल तो समाज में बोल देते हैं ये सिद्ध पुरुष है, उसके लक्षण तो लिखे हैं. तो जो कृष्ण पहले ही श्लोक में उसको सारांश में आंसर कर देते हैं. 55 2.55 निकालो. आगे 2.55 and what is the shloka? Arjuna vacha Krishna vachi Bhagavan vacha prajayati yada kaman मनोगत. जितनी भी इंद्रिय भोग की इच्छा होती है वो समझ जाता है, वो उसको छोड़ देता है. क्यों? मनोगता, ये मन में ही है, बाहर आनंद नहीं है. पूरी जिंदगी हम जो आनंद की इच्छा करते हैं वो एक काइंड ऑफ एंटिसिपेशन है. अगर ये होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा. खुशी खाली एंटिसिपेशन में है, ऑब्जेक्ट में नहीं है. मैं सोचता हूँ मेरे पास मर्सिडीज हो जाए, बड़ा खुश हो जाऊंगा. तो खुशी क्या है? मर्सिडीज में नहीं है, जब मिलेगी तब भी नहीं है. खुशी आपकी एक कल्पना में है बस. मनोगतान, देखिए शब्द कृष्ण यूज करें. व्हाट इज द सब यूजिंग? मनोगतान. प्रजाहति यदा कामान, सारे काम इच्छा को वो रिजेक्ट कर देता है. प्रजाहति मतलब रिजेक्ट. सर्वपार्थ मनोगतान, समझ जाता है कि सब एक मन की ही गति है. गति मतलब एक मूवमेंट है ना. गति, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का भी नाम गति है, वो इधर से ही आए. गति, गति मतलब आपकी गति. तो ये मर जाता है, क्या बोलते हैं कन्नड़ में? वो बोलते हैं Gati only, Prabhu. In Hindi, in Kannada also it's called as Gati only. Gati means वीर like गति. destination. It's called गति as. कहाँ पे? किसी और गति है कहीं पे? Gati means destination. तो गति मतलब मूवमेंट. So he says सर्वपार्थ मनोगतान प्रजाहति यदा कामान सर्वपार्थ मनोगतान. ये जितने भी इंद्रिय भोग की इच्छा है मन में ही है, बाहर नहीं है. हम मन में बना लेते हैं. जो सुवर्णी को देख के मन में बना लेता है, उसको मिलूंगा तो बड़ा अच्छा होगा. हम लोग सुवर्णी को देखते हैं, मन में है, खाली सुअर के मन में है, उसमें कोई आनंद नहीं है. आत्मनि एवात्मना तुष्टः, आत्मनि एवात्मना तुष्टः, वो आध्यात्मिक आनंद में तृप्ति लेता है. स्थित प्रज्ञ उच्चते, उसी को स्थित प्रज्ञ बोलते हैं. जो इंद्रिय भोग में आनंद लेता है लेकिन आध्यात्मिक आनंद को लेना शुरू करता है, उसी को आप, ये तो कॉमन सेंस है ना. आई थिंक आप भी किसी को भी साधु को देख के आप क्या सोचते हैं? अगर इंद्रिय भोग ढूंढ रहा है आनंद के लिए, आप उसको साधु छोटा मानेंगे, है ना. उसको आध्यात्मिक आनंद में तृप्ति नहीं चाहिए, वो इंद्रिय भोग के लिए आनंद नहीं ढूंढता है. सो दिस इज कृष्णा से द डेफिनेशन. बाकी श्लोक में कृष्णा इज एलैबोरेटिंग दैट इज दैट. ओके, डन. Now we came today to the third chapter, and in the third chapter, the Arjuna asks this question. He, Krishna, I am little confused. आपने 2.49 श्लोक में बोला था विहाय, सब छोड़ दो, दूरेण ही अवरम कर्मा,
सारे उल्टे सब काम छोड़ दो और आप मेरे को युद्ध करा रहे हो, ये उल्टा ही काम तो है। तो बेसिकली गीता सेकंड चैप्टर में कंप्लीट हो जाती है। ही इज ट्राइंग टू एक्सपैंड नाउ। अर्जुन क्या कर रहे हैं? अर्जुन ने 5 प्रश्न पूछे थे, कृष्ण ने उत्तर दे दिए। अर्जुन ने फिर एक और प्रश्न पूछा, उसका भी उत्तर आ गया। गीता तो खत्म हो गया, बट अर्जुन उसको थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि वो इतने में सारांश लोगों को समझ नहीं आएगा, है ना। हमको थोड़ा और शिक्षा चाहिए। Therefore, this comes the question Arjun asked कि स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब जंगल जाके बैठ के नाम जप करेंगे या ध्यान लगाएंगे केव में जाके, कहीं गुफा में बैठ के। लोग ऐसे सोचते ना, आध्यात्मिक जीवन मतलब कहीं जंगल निकल जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे और कहीं गुफा में बैठ के ध्यान लगाएंगे भगवान को। ये युद्ध करने की क्या जरूरत है? He asks this question. So Krishna answers this question. That is the 3rd to 9th जो अभी तक हमने किया है, निष्काम कर्म योगा। कि अर्जुन देखो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध अगर करोगे तो उससे तुम्हारा धीरे धीरे दिल पवित्र होगा। ये जो निष्काम कर्म मतलब तुम कोई फल को इच्छा में काम नहीं करना, तुम्हारा ड्यूटी है। एक क्षत्रिय का धर्म पालन करना तुम्हारा ड्यूटी है। तो इसको पालन करोगे, दैट विल बी बेटर देन आर्टिफिशियली जंगल में जाके बैठना, बिकॉज तुम्हारा मन पवित्र है नहीं। जंगल में जाके अकेले बैठोगे, मन भी शांत रहेगा, तुमको बहुत विचलित करेगा और बहुत अशांत हो जाओगे। ये तो हम लोगों को दिखता ही है, जब बिना काम के कहीं बैठे रहते हैं कुछ दिन, मन बहुत विचलित हो जाता है ना। इंगेजमेंट ज्यादा शांति लगता है ना, खुशी लगता है। दैट्स व्हाट इज द सिचुएशन फॉर अर्जुन। कृष्ण से ऐसा कर। तो वी हैव डन टिल 3 to 9, बट आई वाज फीलिंग 5 मिनट थोड़ा कीर्तन करेंगे, देन वी कंटिन्यू। Suhas will sing. Yes. And Tushar will play. Yes, Suhas sing. We have many doctors here. ये anesthesia के डॉक्टर हैं. Doctor is heart specialist. Oh, number 1 neurosurgeon, and we have eye specialist. 3 doctors already here. अरे भूल गए, माता जी होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट हैं। सिंग नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Okay. So maybe at the end we can make on this board the whole chapter. So now 10 to 16. Who's this 10 to 16? You ready? Yeah. Okay. No. 10 to 16. Shloka 10. Read the translation. In this 10 to 16, Prabhupada has told us that in this, Lord will explain the prescribed duties of a worldly person, someone who is not a self-realized soul but doesn't want to incur sin can follow the Vedic rules to enjoy the worldly materials. So this is the whole 10 to 16. So first 10, in the beginning of creation, the Lord of all creatures sent 4 generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because this performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." So in this sloka, what we are understanding, here the demigods and the sacrifices were designed by Lord Vishnu, so that the people can live without anxiety and slowly start their journey to Krishna consciousness path, ultimately reaching Godhead. Told in the purport by Srila Prabhupada ji, this arrangement is offered to the conditioned soul to come back home. In the age of Kali Yuga, Sankirtana Yoga is prescribed for performing other than the other yoga is not because the other yoga is not possible in Kali Yuga. But problems for conditioned soul begins when he forgets the main reasons behind the Vedic prescription, that is, realize that Krishna is the ultimate God and creator of everything. Okay, this is clear. First part.
Everybody understands? The 10th shloka now starts one more portion of this chapter where Krishna is saying we have to do some yajna. Just like अभी बारिश नहीं आ रही तो कुछ जगह यज्ञ कर रहे हैं लोग. So तमिलनाडु में AIDM के यज्ञ कर रहा है. कुछ लोग बाल्टी के अंदर बैठ के कुछ तपस कर रहे हैं. कुछ जगह मैडम की शादी कर रहे हैं. तरह तरह से लोग करते हैं. बट गीता में भी अभी कृष्ण जी बोल रहे हैं जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है, आप बिल नहीं दिए तो इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है ना. तो हमको इतना सप्लाईज भगवान का मिल रहा है. दैट इज एक्चुअली कृष्णा इज गिविंग, गॉड इज ओनली गिविंग. हर समय भगवान का कृतज्ञ रहना चाहिए, है ना. अब ये कोई सूरज मिल रही है, आपको बाहर जाते हैं इतना अच्छा हवा आ रही है, बारिश आ रही है, जमीन में चल रहे हो, ये सब भगवान का गिफ्ट है. वी शुड बी. लेकिन लोग डायरेक्टली भगवान तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उतना पवित्रता नहीं है. तो देवी देवताओं को शुरुआत कर सकते हैं. जनरली लोग यहाँ पे तो मैंगलोर में तो देवी देवता को लोग ज्यादा मानते हैं, है ना. भगवान की पूजा कम ही है. उड़ुपी में एक कृष्ण मंदिर है बस. जनरली देवी देवता पर लोग खुश रहते हैं. देवी देवता ही भगवान के ही एक बहुत बड़े क्या कहते हैं अंश हैं. भगवान का ही अरेंजमेंट है और उनको अपॉइंटमेंट लेटर है भगवान से. कृष्णा का अपॉइंटमेंट लेटर है उनके पास और उनको अलग अलग काम दिया हुआ है और वो सब लोग भगवान के महान भक्त हैं. तो शुरुआत में आदमी को सिर झुकाना सीखना बहुत बड़ा चीज है. हिंदी समझ आता ना. सिर झुकाना आसान नहीं है माता जी. तो शुरुआत चलो आप झुकाना शुरू करो, देवी देवता पे झुकाना, वो भी शुभ है. लेकिन धीरे धीरे उसको भगवान के आगे सिर झुकाना सीखना पड़ेगा. इसलिए भगवत गीता में कभी भी ये नहीं लिखा कृष्ण वाचा, श्री भगवान वाचा. गीता का नाम भी कृष्णा गीता नहीं है, भगवत गीता है, भगवान के शब्द. तो जनरली सोसाइटी में भगवान के बीच में और देवी देवता के बीच में डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं, सत्य डिफरेंस है ना. वेंकटरमना आप लोग तो सब मानते हैं, है ना. भगवान है, इज बालाजी. बालाजी, विष्णु, कृष्णा, दिस इज कॉल्ड विष्णु तत्व. इसको कृष्ण तत्व या विष्णु तत्व बोला जाता है. दिस इज गॉड. एक ही है. कृष्ण जी बलराम के साथ खेलते हैं, दो व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति है. तो लीला उनके. परशुराम से कभी कभी राम लड़ने भी आते हैं. परशुराम और राम में कोई फर्क नहीं है, एक ही व्यक्ति. लेकिन देवी देवता भगवान नहीं है, वो भगवान के सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़े सेवक हैं. लेकिन उनकी भी पूजा में आदमी को धीरे धीरे दिल पवित्र होता है. बिकॉज क्यों? वो आपको सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट कि कृष्ण ने ये विष्णु ने यज्ञ का सिस्टम बनाया हुआ है, उसको हम फॉलो करेंगे, अच्छा रहेगा. अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल दोगे तो अच्छा रहेगा. करेक्ट. ऐसा नहीं है कि देवी देवता आपके जो आप यज्ञ कर रहे हो उस पर निर्भर करते हैं. उनका तो अपना खाना है, लेकिन उनके लिए एक स्वीट डिश एक्स्ट्रा आ जाती है. ठीक है. जैसे आप किसी को खुश करना चाहते हो तो आप उनको कुछ ऑफर करते हो, तो हमारा ग्रेटिट्यूड होना चाहिए. बिकॉज वो लोग एक्चुअली उनको डिपार्टमेंट के हेड हैं. वो लोग अलग अलग ये डिपार्टमेंट, आपके कैबिनेट मिनिस्टर ले लो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं. आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, यमराज को हम मजाक में बोलते हैं प्लेसमेंट डिपार्टमेंट. आपको कहाँ नेक्स्ट जाना है निश्चित करते हैं. तो अलग अलग डिपार्टमेंट निश्चित है. ठीक है. 11 श्लोका. हाँ, आप यू कैन नाउ एक्सप्लेन. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please him, and thus, by cooperation between maid and demigods, prosperity will reign for all. So, in this 11th sloka, here Srila Prabhupada explains that demigods are given responsibility for of the certain elements such as earth, fire, water, light, air, etc. And soul can be benefited in this world by pleasing the demigods by the yajna. But actually for all the yajnas and the sacrifices, Lord Vishnu is the chief beneficiary. While enjoying the benefits bestowed by yajnas, human soul should never forget the actual purpose, that is, think of the path for the liberation and lead to Krishna consciousness. Okay, next. ठीक है. This is clear, everybody. Keep the mic. This is clear. बेसिकली कोऑपरेशन होना चाहिए. देवता लोग आपको सारा अरेंजमेंट देते हैं, हमको उनको उनके लिए यज्ञ करना चाहिए. तो यज्ञ इज इम्पॉर्टेंट. बट कलयुग में ये सब यज्ञ करना मुश्किल है. एक तो घी, शुद्ध घी 2000 रुपये में भी नहीं मिलता. आप तो शुद्ध घी को जो ढूंढते रहते हैं लोग, वो जो मार्केट में मिलता है वो तो शुद्ध नहीं है, सबको मालूम है. बन ही नहीं सकता 500 रुपये में घी. वो 1200, या आपने देखा ना माता जी, शुद्ध घी 1500 2000 में बिकता है.
उसका भी गारंटी नहीं। हाँ, घर में बनाना वो तो ठीक है, हमारा मंदिर में तो हमारा कम पड़ जाता है हमारा वो शुद्ध है, लेकिन जो घर में जो बनाते हैं वो तो दूध शुद्ध नहीं, उसको भी हम ला रहे हैं। हम लोग एक क्या कहते हैं, किधर से ला रहे हैं, कुछ लोग सप्लाई ना है, नंदिनी का तो भैंस बकरा सब है, देसी A2 गाय, वो दूध आ रहा है 95 रुपये लीटर। तो मतलब ये अगर आपको यज्ञ करना है, डालडा नहीं चलेगा, घी चाहिए, शुद्ध घी। कितना महंगा एक चीज कि सब लोग नहीं कर पाएंगे, है ना। 1 लीटर घी हर दिन डालना आपको तो घर में रोक लेंगे 1,500 रुपये लग जाएगा। और दूसरा चीज, आपको मंत्र बोलने वाले लोग नहीं है। जनरली जो पुजारी लोग आप बुलाते हैं भटरू, उनको उसका मतलब भी नहीं मालूम होता क्या जब कर रहे हैं, और वो भी शुद्ध ब्राह्मण नहीं है, दिल में पैसे की इच्छा रहती है। कोई मेरे को बोल रहा था, वो पूजा करने आए घर में, तो उसने 500 रुपये दक्षिणा दी। वहां तो पब्लिक के सामने कुछ नहीं बोल पाया, घर जाके फोन किया, क्या इतना बड़ा 2 घंटे का पूजा किया, 500 रुपये, 2000 देना था। वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण दक्षिणा डिमांड नहीं कर सकता। तो वो जो उच्चारण है ना, उससे भगवान का वो भगवान को खुश नहीं कर पाएगा, उसका दिल पवित्र नहीं है। तो ना तो मंत्र जप करने वाले लोग हैं, नहीं सामग्री के लिए हमारे पास क्षमता है अभी, है ना। तो इसलिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ रिकमेंड कर, हरिनाम यज्ञ, भगवान का नाम का जो भी यज्ञ होता है, ये ही कंप्लीट यज्ञ है। और इसको तो कोई भी घर में कर सकता है, आप लोग बैठ के आराम से कर सकते हैं। ये जो भगवान के नाम का जो उच्चारण है, ये एक्चुअली अलौकिक है, इसमें बहुत मधुरता है। जितना जितना हमारा दिल पवित्र होगा, तब हम जब नाम जप करेंगे, आपको अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। इसी शक्ति से हम विश्व भर में लोग भक्त बना रहे हैं। हमारे पास भक्त दुनिया भर से हैं इस्कॉन के, आपको मालूम होगा क्यों। हम लोग क्या क्या चीज, हमको को घूस तो नहीं दे रहे। जैसे बहुत धर्म लोग क्या करते हैं, पैसा ऐसा देके लोग कन्वर्ट, हम कैसे कर रहे हैं, हम तो पैसा नहीं दे सकते। अमेरिका में क्या पैसा देंगे, वो तो हमसे सेठ है। हम उनको ये हरि नाम का एक सुख दिखा रहे हैं। वो बैठ के हमारे साथ हरि नाम, वो जब कीर्तन होता है उसमें उनको तो ये मतलब ही नहीं मालूम। रामकृष्ण तो उनके बाप किसी को मालूम नहीं ना, उनके घर में कभी नाम नहीं हुआ है ना। लेकिन जब वो सुनते हैं, मधुरता है इसमें, और फिर धीरे धीरे आकर्षण आता है। आप समझ रहे हैं। तो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही मेन चीज है, ये नया चीज नहीं है। कलयुग के जितने हमारे कर्नाटक के कौन है आचार्य, कौन बोले हरिनाम वंदे साको, हाँ पुरंदरदास बोले कलयुग में हरिनाम वंदे साको, यही एक सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है ना। और आपके इस एरिया में है भजन मंडली, लोग करते हैं भजन, वो क्या कहते हैं, संस्कृति है, संस्कार है लोगों को, हर जगह हर एरिया में भजन मंडली। लेकिन थोड़ा लोग को गाइडेंस चाहिए बस, जैसे दिल में है लोगों को। तो कलयुग में वही एक आधार है। अब ये सब यज्ञ हज्ञ करना ठीक है, अच्छा तो लगता है, हवन होता है, लेकिन पूर्ण तरह से दिल को पवित्र नहीं कर पाएगा। आप कहीं हवन होता जाके बैठते हैं, अच्छा ही लगता है, वेद के मंत्र लोग जप करते हैं, अपने को अच्छा ही लगता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली तरीका आपके पास घर में ही है, बैठ के लोग ताली बजा के हरि नाम कर सकते हैं, मृदंग करताल नहीं भी वो चलता, और इतना उसमें आनंद का अनुभव। एक बार पहला स्टेज जब आप हरि नाम भगवान का नाम जप करना चाहते हैं, आपका दिल पवित्र होता है पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आनंद आता है। लोग थोड़े अशांति हैं, वेट नहीं करते, अरे मजा नहीं आ रहा, अरे वेट करो, अभी तो धुलाई तो होने दो। जब तक दिल साफ नहीं होगा उसको भगवान वास नहीं करेंगे। तो लोग को इमीडिएट चाहिए, कुछ ना मैजिक शो चाहिए, तो थोड़ा साधना चाहिए। भगवान आपको टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्टिंग स्टेज होता है, कितने आप सीरियस हो। अगर आप वो थोड़ा टाइम के लिए हरिनाम को रेगुलरली करेंगे, आपको इमीडिएटली फिर आनंद का अनुभव शुरू होना होता है, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, फिर तो आपको बहुत खुशी होगा, एक लाइफ का प्रैक्टिस में। हमारे मंदिर में रेगुलरली रहता है कीर्तन, अभी भी होगा हरिनाम, थोड़ी देर में भगवान का आरती है, ठीक है। नेक्स्ट 12th. In the charge of the various necessities of life, the demigods being satisfied by the performance of Yajna, will supply all necessities to you, but he who enjoys such gifts without offering them to the demigods in return is certainly a thief. ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी ले लिया लेकिन बिल नहीं देंगे तो चोर है, करेक्ट। तो देवी देवता आपको सारे अरेंजमेंट दे रहे हैं, उनको नमस्कार करना बहुत जरूरी है। ये तो मैंगलोर में है, लोग देवी देवता मंदिर जाते हैं, कृष्ण जी भी बोल रहे हैं, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment verily eat only sins. यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यते सर्वकिल विषय भुंजते देदो अगम पापम ये पचंती आत्म कारणात्। ये तो श्लोक था ना। जब आप यज्ञ में खाने को ऑफर करते हैं, खाना पवित्र हो जाता है, क्योंकि किसी भी खाना, वेजिटेरियन खाने में भी कुछ पाप है। आपने
पौधे पेड़ पौधे को कुछ इनकन्वीनियंस तो दिया है ना, लेकिन ये तो क्रूर नियम है, जीवो जीव से जीवन। एक जीव दूसरे जीव को ही खाएगा, पत्थर तो खा नहीं सकते, लेकिन उसको यज्ञ करके खा लो। इसलिए हमारा मंदिर में लोग, हमारे संस्कृति में प्रसाद की इतनी वैल्यू क्यों है? प्रसाद में पूरा पवित्र है, जो भी उसका कर्म था भगवान ले लेते हैं। आप जब खाने को गर्म भी कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें भी कीटाणु मर रहे हैं, आपको दिखता नहीं है कितने बैक्टीरिया मर जाते हैं, नहीं, भगवान उसको पूरा क्योंकि आप उनके लिए, जैसे आप अपने देश के लिए युद्ध के लिए जाएंगे, अगर आपने कुछ 100 लोग भी मार दिया, आपको कोई पाप नहीं मिलता, आपको परमवीर चक्र मिलता है, नहीं, पाप नहीं होता। तो सिमिलरली जब आप भगवान के लिए आप कुछ भगवान के लिए खाना बना के उनको ऑफर करेंगे, अगर उसमें कुछ का पाप है भी तो भगवान उसको माफ करें, है ना। इसलिए भगवान, लेकिन भगवान सब कुछ नहीं लेते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, खाली 4 खाने कृष्ण ने भगवत गीता में लिखे। पत्र मतलब पर्टिकुलरली तुलसी, एनी लीफ, बाकी पत्ती भी खाते हैं लोग। पत्र, पुष्प, फूल, फल तो हो गया वेजिटेरियन ना। पेड़ से तो यही 3 चीज निकलती है, और क्या निकलता है पेड़ से? फल निकलते हैं, पत्ते निकलती है और फूल निकलते हैं। इन 3 से आप खाना बना लो बस। कृष्ण बोला यही हमको ऑफर, पत्र पुष्पम फलम तोयम, ये यो मैं भक्ता प्रयच्छति, ये जो भक्त मेरे को ये सब देते हैं मैं स्वीकार करूंगा, अगर प्रेम से स्वीकार तो वो प्रसाद बन जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते मैं ये दूंगा, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मासम बोलो तो हम दे देते, लेकिन कृष्ण ने नहीं लिखा। पत्रा पुष्पा फला तोया, तोया मतलब पानी, दूध, ये 4 चीज खाली आप ऑफर कर सकते हैं। तो कृष्ण जी ये चीज को स्वीकार करते हैं। वो को तो कुछ भी स्वीकार करते हैं, भगवान है, वो तो ब्रह्मांड को भी खा सकते हैं। तो आपके लिए बोल रहे हैं ये, क्योंकि मंदिर में यही 4 नैवेद्य होता है, यही 4 चीजों का होता है ना। अनियन गाली भी नहीं यूज करते, क्योंकि वो थोड़ा तामसिक इन्फ्लुएंस होता है नैवेद्य में, करेक्ट। तो अगर आप ऐसा भोजन आप भगवान को नैवेद्य करके अगर खाना खाएंगे तो 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा। घर में खाना बनाते हैं, 5 मिनट भगवान को नैवेद्य करके खा लीजिए, अच्छा रहेगा, यही उसका प्रोसेस। अगर आप नहीं कर रहे तो ये तो ठीक नहीं ना। आप जैसे आपके घर में गेस्ट आए, आप खाना ना बनाएंगे, उनको नहीं दे रहे, फिर खा रहे हो तो ठीक नहीं ना, कल्चर नहीं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए हमारे घर में भगवान का ही वास है, हर घर में मंदिर होता है, आप सामने भगवान को थोड़ा ऑफर कर दीजिए। आइए, इतना तो कल्चर है ही। किसी भी कल्चर में, किसी भी रिलीजन में खाने से पहले भगवान को लोग याद जरूर करते हैं, है ना। 1-2 मिनट भगवान को स्मरण करके उनको थैंक करके खाते हैं। इलैबोरेट मंदिर में तो नैवेद्य होता है, वो अच्छा रहता है, धीरे धीरे घर में भी लोग सीख सकते हैं। तो जो लोग नैवेद्य करके खाना खाते हैं, पवित्र खाना खा रहे हैं, उसको कोई कर्म नहीं, कर्म भी निकल जाता है और उसमें शक्ति है, देवी को भगवान का आशीर्वाद उसमें आ गया, आपने भगवान को नैवेद्य किया। भुजते दे तो अगम ये पचंती आत्म कारणा, जो भगवान को नैवेद्य करके नहीं खाते वो पाप कर्म खा रहे हैं, बिकॉज जो पाप हुआ उस खाने को बनाने में आपको वो स्वीकार करना है, लेकिन भगवान का नैवेद्य करने में वो कर्म निकल जाएगा। इसका प्रसाद का वैल्यू है। आपको खाली 5 मिनट थोड़ा वेट करने का। एक स्पेशल प्लेट ले लीजिए जो किसी में कोई नहीं खाता, तो खाली भगवान के लिए रखिए। एक तो ऐसे ग्लास ले लीजिए। खाना बनाने से पहले सोचिए घर में एक गेस्ट आए हुए है ना, उसमें सब कुछ अरेंज करिए, भगवान को 5 मिनट आप निवेद्य कर दीजिए, भगवान आप स्वीकार करें प्रेम से। मंत्र होते हैं लेकिन शुरू में आप प्रेम से बोल दो, बाद में मंत्र भी आते हैं, तो आपका क्या जो खाना आपको भी खुशी लगता है। और उसमें तुलसी डालना जरूरी है, सब चीजें। तुलसी के बिना भगवान को स्वीकार नहीं करते, है ना। फिर उसके बाद आप खाना खाइए तो आपको बहुत खुशी होता है। खाना परोस दिया भगवान को, उसके बाद जब वो परोसने के बाद या तो जो वहाँ पे रखा है उस भोजन को कहाँ पे किया जाए, या तो जो भोजन हमारा नहीं, वो प्लेट में किसी को खाना नहीं चाहिए। वो प्लेट से खाना आप निकाल के मिक्स कर सकते हो बाकी मेन प्लेट में। हम तो मंदिर में ऐसा करते हैं, है ना। वो भगवान का खुद उनका प्लेट है, बोलते हैं कि भगवान का सलाइवा उसमें है। अब लेकिन दिखता तो है नहीं, खाना वैसे के वैसे ही रह गया। वो भगवान का शक्ति है पूर्ण। भगवान से जैसे इतने अवतार आते हैं, भगवान वैसे के वैसे ही रहते हैं, कम तो नहीं होते ना, है ना। भगवान कम तो नहीं होते। तो सिमिलरली खाना भी बिकॉज भगवान ने स्वीकार किया है वो अद्भुत हो जाता है। भगवान ने खाया लेकिन वैसे के, भगवान उसको टेस्ट कर चुके हैं लेकिन वैसे के वैसे ही रहता है। वो उनकी शक्ति है, हमको दिखता नहीं। तो किसी ने प्रभुपाद जी को बोला, भाई कैसे मालूम भगवान ने खाया नहीं खाया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैं किसको विश्वास करूं, तुम्हारे जैसे गधे को विश्वास करूं या भगवान को विश्वास करूं। कृष्ण जी बोल रहे हैं गीता में मैं खाता हूं, और तुम बोल रहे हो नहीं खाता, मैं किसको विश्वास करूं। मैं तो भगवान को विश्वास करता हूँ, तुम्हारे विश्वास करके क्या फायदा। गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोले क्या झूठ बोल रहे हैं क्या,
वो बोल रहे प्लेट रखो मैं खाऊंगा और तुम बोल रहे नहीं खाते, तब किसको विश्वास करें? तो झूठ तो नहीं बोल रहे, तो बोल रहे मैं खाता हूँ। और एक चीज और है, जैसे आप नाम स्मरण अभी करते हैं, अगर आप हर दिन नाम स्मरण करेंगे तो आपको नाम का प्रभाव दिख जाएगा। आपको लगेगा मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, खुशी आ रहा है, आनंद आ रहा है। ये आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको खुद लगेगा, नहीं खुद अनुभव होगा। सेम अगर आप प्रसाद खाना शुरू कर दें, आपको खुद अनुभव होगा ये खाने में बड़ा स्पेशल है, बड़ा आपको कभी कभी मंदिर से प्रसाद लेता आता ना यार, कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, इसको आपको खुद लगता है ये खाने में कुछ शक्ति है। ये किसी को एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप समझ रहे हैं? एक्चुअली क्या है, अभी हम भौतिक हैं, अभी हम भगवान का दर्शन कर नहीं सकते। भगवान कृपा से कुछ चीजों से अपना दर्शन देते हैं, अपने नाम से दर्शन देते हैं, अभी अपने विग्रह से दर्शन देते हैं। विग्रह भी तो मार्बल क्या है सब लोग को मालूम है, जयपुर में मिलता है, लेकिन नहीं, जब आप उनको प्रेम से स्वागत करते हैं भगवान उसमें वास करते हैं। तो आप उनको जब सेवा करने जाते हैं, भगवान आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको दर्शन भी एक्सपीरियंस हो जाता है। ये कोई मूर्ति नहीं है, भगवान खुद खड़े, वो सबके लिए नहीं होता। जैसी पवित्रता होती है आपको भगवान का दर्शन मिलता रहता है, ठीक है ना? शास्त्र में भी अभी गीता पढ़ रहे हैं, आपको आध्यात्मिक गीता को कोई जमीन में नहीं रखता, क्यों इज्जत देते हैं? कि भगवान ही है, भगवान का ज्ञान और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान का विग्रह भगवान में कोई फर्क नहीं है, भगवान के प्रसाद और भगवान में भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए भगवान के प्रसाद को भी इज्जत दी जाती है, करेक्ट नहीं? इन चीजों से भगवान प्रकट हो जाते हैं। और पांचवा चीज, बहुत महान आचार्य, उनको भी रेस्पेक्ट दी जाती है, उनकी पूजा करी जाती है। क्यों? वो पूरी तरफ से भगवान को पूरे दिल में वास कर दिया है। महान, जैसे हमने प्रभुपाद जी का मूर्ति नहीं लगाया क्योंकि वो महान भक्त है। 27, the last portion of today's cycle of sacrifice, 14-15. All living bodies subsist on food grains which are produced from rain. Rains are produced by performance of yajna, and yajna is born of prescribed duties. What is this? इसको explain करिए। Here is importance is like we are explain that meat eater and the fish eater, who is eating the non-vegetarian food also, they are also indirectly depending on the rain, because those are like meat, who is eating the meat and all, they are also eating the that leaves and all, which is growing due to the rain only. So directly or indirectly we are depending on rain only. So we should eat the veg food only, maybe here. चलो, the cycle of sacrifice I'll just conclude for today. Now 2 minutes or only. अभी 12:30 बजे भगवान का आरती होता है, आरती करेंगे, फिर उसके बाद भगवान का प्रसाद लेंगे, ठीक है? आज थोड़ा हमारा चैप्टर थोड़ा मेरे को रिवाइज किया तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, जनरली हम एक चैप्टर को कर लेते हैं। ओके, पॉइंट ये कि सब लोग को समझ आने का, चैप्टर हो आधा चैप्टर हो, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, द मेन पॉइंट इज सब लोग खाना खाते हैं। कोई लोग बोलते हैं गीता में जो है सब मिथ्या है। मैंने कहा तो क्या मिथ्या है भाई? अन्नाद भवति भूतानि, सारे जीव जो है अन्न खाते हैं, करेक्ट? कि मिथ्या क्या है? तो सच है, नहीं आप भी खाते, उसके बिना कोई नहीं जी सकता। पर्जन्य अन्न संभवा, और जो खाना है ये बारिश की वजह से आता है, ये भी लॉजिकल है भाई? ये लॉजिकल है नहीं है। सब लोग अन्न पे निर्भर है और अन्न बारिश पे निर्भर है, लेकिन तीसरा चीज नहीं, किसी को मालूम नहीं। यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ के वजह से बारिश होती है। किसकी वजह से? यज्ञ के वजह से बारिश होती है। यज्ञ कैसे? यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कलयुग में मतलब कौन सा यज्ञ चलता है? संकीर्तन यज्ञ। बाकी यज्ञ के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, ना ही वैसे ब्राह्मण रखे। और यज्ञ कर्म समुद्भव, सब अपना अपना जो ड्यूटी से पालन करो, वो यज्ञ है। और ड्यूटीज कहाँ से पता चलती है? वेद से पता चलती है हमारी ड्यूटीज, है ना? तो क्या करना है क्या नहीं करना है, धर्म का ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेद से। हम थोड़ी घर में बैठे ट्रैफिक लॉ बनाते हैं। ट्रैफिक लॉ गवर्नमेंट बनाती है, नहीं। आप थोड़ी बोलेंगे मैं आज से बीच रोड में चलाऊंगा, मैंने निश्चित कर दिया, वो कौन सुनेगा? वो गवर्नमेंट बनाती है ट्रैफिक। सिमिलरली धर्म भगवान देते हैं। धर्मम साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का स्रोत कहाँ से आता है? भगवान से। भगवान जो आदेश देते हैं वही धर्म है, ठीक है ना? तो एक साइकिल हो गया। तो भगवान से वेद आते हैं, वेद से आपका कर्म निश्चित होता है, कर्म से यज्ञ होता है, यज्ञ की वजह से बारिश आती है, बारिश से आप अन्न खाते हैं, सब जीव जीते हैं, और जीव भगवान को जो खाना है निवेद्य करते हैं, और भगवान से फिर वेद आते हैं। पूरा एक साइकिल है ये। नेक्स्ट टाइम हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। एनीथिंग एल्स? इतना काफी है ना आज के लिए? इट्स ओके। Just one more question, Prabhu.
Hare Krishna. For today. Hare Any Krishna, questions? Prabhu. Just one question. माता जी कुछ प्रश्न है? Just one question. Your first time coming. It's clear? Slowly, becoming clear. ऐसा था just like कोई image है. थोड़ा pictures are there. Still full picture is not there. ठीक है? What is there is clear, but it's not fully clear. Just give little time, patience. It will become. It takes time. आप वेद गीता का साइंस को समझना चाह रहे हैं, एक टाइम में तो नहीं आएगा. धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा. थोड़ा कुछ प्रश्न रहते हैं. Everything is clear. Which yagna is highest yagna? Sankirtana yagna. Just one question, Prabhu. Okay. Hare Krishna. So we continue next time from. So we have done the half of the third chapter. First and second shloka we did Arjuna's confusion. Third to 9th shloka Nishkam Karma Yoga was upheld, and 10 to 16 shloka Krishna talked about Karma Kanda. But तुम्हारी कोई इच्छा भी है उसके लिए यज्ञ करो. Now next time 70 to 35, 36 to 43 I'll explain, and then we will again summarize the whole chapter. उसको पकड़ने की कोशिश करें. कैसा लगा ये तरीका? अच्छा है? थोड़ा आइडिया लग रहा है? आप थोड़ा क्योंकि नेक्स्ट टाइम आइए and we will see the third chapter is properly understood. First, second chapter मैंने सारांश तो बता दिया. आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो समझ आएगा. और ये साइकिल चलता रहेगा. फर्स्ट टू 8 अगर आपने यहाँ थर्ड से शुरू किया, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 उसके बाद 1, 2 आएगा तो आपका कंप्लीट हो गया. साइकिल 18 चैप्टर्स का चलता रहेगा. तो कहीं से भी आप ज्वाइन हुए फिक्र नहीं करिए, वो आने वाला है रोटेशन. ठीक है, मैं 3 टाइम पे साइकिल करना चाहता हूँ. पीपल कैन मेक कुछ श्लोक भी याद करने हैं. थर्ड चैप्टर के श्लोक, पहले श्लोक चैप्टर में खाली एक श्लोक मैंने दिया था याद करने के लिए. पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे. सेकेंड चैप्टर में मैं 19 श्लोक दिया था याद करने के लिए. 19. ठीक है. First chapter 1. That is also okay. 39, 40 और 40. ठीक है, that is additional. That is now third chapter. We have shloka 3.5, 3.6, 3.9, 3.13, 3.14, 3.15, 3.21, 26, 27. It's a very big number. I think I can give a smaller list. रोहन, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा सर. वो छोटा वाला लिस्ट कितना है? ये तो 208 श्लोक का लिस्ट है. सर वो आपको भेजूं सर फिर से? हाँ, yesterday we did in that place IYF. IYF में NIT के में कल छोटा लिस्ट था. श्लोका नंबर 9, 4, 21, 27, 37. ये नोट डाउन. 9, 14, 21, 27, 37. 1, 2, 3, 4, 5. ये 5 श्लोक याद कर लेना सब लोग. ठीक है, थर्ड चैप्टर के. Hare Krishna. Hare Krishna, Aishwarya. You are able to understand? Is it okay? Today we revised for you first chapter also, second chapter also. ठीक है, we'll all go for आरती now. अभी आरती देखेंगे हमारे राधा कृष्ण जी का, फिर हम लोग इकट्ठा प्रसाद लेंगे. ठीक है.
ಬಾಕಿ ವಸ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಸರ್ ಯಾವ ಊರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅದೊಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, ಈಗ ನಾವು 493 ಮಾಡಿದೇವು ಸರ್. ಯಾವುದು ಸೇಡಮ್ CSDP. ಈಗ